Okay, today we'll discuss about environmental impact assessment and the impact assessment notification by Minister of Environment Forest of Government of India in 2006. Actually, there is a environmental clearance notification regarding this EIA first time in India in 1994, which is ruled out in 2006 specific environmental impact assessment act or notification. This is not act, this is a notification under the Environment Act 1986. So about EIA, I think you have somewhat knowledge that what is environmental impact assessment. Environmental impact assessment means you are accessing the overall environment, the before, after, and present scenario of any project or in modernization project, urban development project, or any activity which has some environmental impact. So we'll go for the assessing the impact in all levels, like in what is the impact of the project on air, on water, on the soil, on the public, means social impact, all are in combined call your environmental impact assessment. So this is a vital part. By assessing this environmental impact of any project or existing project for modernization of that, or a new project to be set up, or any activities or any developmental activity, we need a environmental clearance which is a mandate after come into force of your environmental laws in Government of India. So whatever environmental clearance or environmental laws we are studying in our syllabus, or for national level any competition like your net or gate or anything, we should link all the rules and regulations of the Government of India only. So now we are discussing this environmental impact assessment or environmental clearance scenario in India. Okay, why will go for this environmental impact assessment? Only to get an environmental clearance on a project or a activity or any setup or any developmental activity or project. For that reason, we need an environmental clearance. For example, for mining, we need an environmental clearance. For construction of building or urban development, we also need some environmental clearance. If the urbanization area is newly set, going to be newly set up, and for industry we need environmental clearance. For modification of a industry means, let's say we have a ferrochrome factory or a ferrochrome industry, and we have to upgrade this to a integrated steel plant, then that process needs a environmental clearance. And sometime in apart from this mining and industrial processes, dam project also needs somewhere your environmental clearance. So for all these things, the enforcement of environmental law in India or any nation will sought a environmental clearance before we are setting off a activity, or you are setting up a project. So to get the environmental clearance, there are some processes we have to follow. That is called environmental impact assessment. Again, second thing comes the assessment. If we are saying something called assessment, then the assessment must have some assessing body or authority. So for this, we have two type of authority. One is called expert appraisal committee, another is called state level expert appraisal committee. For that, we have state level environmental impact assessment authority, where the nodal agency is Odisha. For Odisha, this is Odisha State Pollution Control Board, or for any state pollution control board or union territory level pollution control board. Okay.
So this is called environmental clearance and environmental impact assessment. What is the need and why you will frame this impact assessment procedure. So if you see this impact assessment procedure, we will have some important things to discuss. That is first about this Ministry of Environment Forest. Now the name is modified in Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Now it is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Then what is environmental impact assessment? Then the notification about this environmental impact assessment. Notification first in 1994, then in 2006. Now there is a new notification coming into force, and that is in the proposal or in the rectification mode. That is the EIA notification 2020, means 2020 notification, which is online in the shape of a draft, and it will pass through the process of checking, and it is in the process. When it will be published in the gazette notification, then it will the new law overlapping or suppressing these 2006 rules, because some drawbacks are there in 2006 rules. So we have to make it more convenient, and some micro level assessment required. For that is for district level assessment, EIA 2020 Act will come into force, notification will come into force very soon. So now we must discuss about 2006, which is a base rule till date. Okay. Then your categorization according to this notification, how we will categorize all the companies or industries or projects. Then stages in environmental clearance. What are the stages of EIA environmental impact assessment we have to follow? Then what is term of reference to be submit? And then the flow diagram of detail process. Okay. So about Minister of Environment and Forest. The Environment Protection, Article 48A. What is Article 48A? Anyone can say? Is it audible to all and the slides are visible? Yes, sir. Okay. Tejaswini? Akanksha? Yes, sir. Yes, sir. It was upon environment, mostly upon not killing the animals or whatever. I don't remember particularly, but something about that. Okay. Okay. Constitution of India, Article 48 comes under what? The There is two things. yes, There is fundamental duties. yes, there is two things Yes. which will amended in 1972, that will give birth to your environmental laws. One is fundamental duties, that is a citizen fundamental duty. Mm, Next one is your directive principle for state policy. DPSP. Yeah. Okay. So here the 48A, another one is 51AG. Yeah, Okay. yeah, 51 AG. Yes. So the environmental protection related to the constitutional article number 48A, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. This is your directive principle of state policy. Okay. Then your objective of MOEF. So why this MOEF means this Ministry of Environment Forest will be framed first. Due to the inclusion of this 48A, that means how the state will have that power to protect and improve the environment and safeguard the environment. For that reason, it needs some authorities, or it needs some ministers, means due to the democratic system,
If you do not have any ministry of any department or any new inclusion, then you can't implement the system of control. So to implement a system of control, there is a political provision should be there in democratic system. So political provisioning and bureaucratic framework. So we need new ministry, and it will be included in the Ministry of Environment and Forest. If you'll see the constitution, whatever written in 1952, what is 1950, what is implemented there in 1952 past government led by Jawaharlal Nehru. There at that time there is no Ministry of Environment and Forest. Gradually, in the time of Indira Gandhi, it will included after Indira Gandhi attended the Stockholm Conference at 1972. Okay, so yes, she came back to India and amended these constitutional articles. Then included first the Water Act 1972, then the Air Act 1981, then the Environment Act, or the Environment within bracket Protection Act 1986, which is very important. And by imposing the powers and concerns and the rules, this EIA notification comes under this Ministry of Environment Forest by this act. This is the Environment Act 1986. Okay. What are the objective of this Ministry of Environment Forest? Why this Environment Forest framed first? First objective is the conservation on and survey of flora, fauna, forest and wildlife. Then prevention and control of pollution. Then afforestation and regeneration of degraded areas, protection of environment, and ensuring the welfare of animals or wildlife. Then next terminology, that is environmental impact assessment. What is environmental impact assessment? The Environmental Impact Assessment Notification 2006 first derives authority of environmental rules. Then 1997 amendment including public hearing. Then we'll have over 13 amendments till the 2006, where 2006 has a new notification come. Then what is EIA? EIA is a study to predict the effect of proposed activity on the environment. It compares actually various alternatives for a project or modification of a project or process control in a project, and it will seek to identify the best known impact factor, means which will impact adversely the environment. We have to identify that factor. That will that may be the combination of economic or environmental cost and benefits. So this notification, according to this notification, any expansion or modernization of any project or activity shall not be undertaken in any part of India unless it has been accorded with environmental clearance by the central government as per the procedure specified in the notification. This is the cream of this notification. Why this notification? This is the main objective of this notification. Why it is come into force in 2006. All new projects or activities listed in this notification, expansion and modernization of existing projects which cross threshold limit for the concerned sector, any change in product mix in existing manufacturing unit, including included in the schedule. There are many schedule given in that documentation, original documentation of the notification, gazette notification. Beyond the specified range, there is a range is fixed for any product. If you increase the production beyond that range, then we will go for another environmental clearance. Then how you categorize these projects? The categorization of the projects. The categorization of the project, firstly, in 2006, it is categorized into two groups. That is group category A projects and category B projects. Again, B is further divided into two, category B1 and B2 projects.
where B2 projects have some public driven projects like a pool, dam, like this, the pool construction, dam construction, which do not need any scoping. Means there is an intermediate stage in EIA. They do not know the proper EIA till you will give in the pre-approval for construction. So only we'll go for this scoping and other steps of this EIA process for category B1 uh, by the state government or state level environmental impact assessment authority. Whereas for category A project, those are very large projects, and the limits are also given in a schedule or annexure in the notification. Those needs environmental clearance for Ministry of Environment Forest on recommendation of expert appraisal committee framed in Government of India, but framed by Government of India. That from central government, it will need the clearance or environmental clearance. In absence of ACIA, if in some cases for category B1 projects, if state level environmental impact assessment or state level impact assessment authority or state level environmental impact and expert appraisal committee for category B shall be treated as category A projects. Means jodi केबे भी कैटेगरी ए प्रोजेक्ट को जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट रो फ्रेम एक अछि जदि एब्सेंट अछि से ग्रुपटा बा से कमिटीटा कोनोसी कारणरू माने को मेंबर रो शॉर्टेज अछि ताहाले स्टेट रो कमिटी कोन करिवो ना कैटेगरी ए प्रोजेक्ट रो बे एनवायरमेंटल क्लियरेंस पाई के असेसमेंट रिपोर्ट दबो फॉर कैटेगरी बी the sole responsibility is the state level environmental impact assessment authority based on recommendation of state level environmental appraisal committee. The category B further divided into B1 and B2. However, guidelines for distinction have not been worked out. Means there is some examples are there for distinction between B1 and B2. Now in a new form of this EIA notification, which is not in the Gazette notification or it is in the draft form, there the equal distribution means that is the proper distribution or distinction between B1 and B2 is there, and for B1 also B2 also we need where the district level environmental impact assessment authority new thing will be framed in EIA notification as an EIA draft notification 2020, which is explained, which is not in comment, not in force, or finally it is in the process of approval, and this is in the draft form. Okay, that is the latest EIA notification, that is EIA 2020. We will discuss some part of this after this. Okay. This environmental clearance, to get environmental clearance, so what we need first. So in the process of environmental impact assessment, the ultimate goal is a activity or a project should get a environmental clearance. To get environmental clearance, the application shall be made from Form A and a supplementary Form Form 1 or a supplementary Form 1A after identification of the site before commencing any construction activity. Means if a company or individual or institution or an organization will start a industry or any project activity, so that institution or organization have to submit a Form 1. The Form 1 is a format where all the environmental impact for preliminary study is given by the proposer who will propose for the clearance, or a supplementary Form 1A if it is necessary for any construction activity. Along with the application, a pre-feasibility project report also need to be furnished. Means the details of the project along with the pre-feasibility project report should be furnished by the proponent who will propose for environmental clearance, who will shout for the environmental clearance for the project or for the industry or for the establishment. Exception to have to the above are construction projects where
conceptual plans need to be furnished. When there is a construction project, we need a conceptual plan for environmental clearance. So what are the stages of this environmental clearance? First stage is called screening. That means for category B projects, scrutiny to determine if the project requires further studies of EIA report or not. Why it is called the screening is important for category B projects? Because category A projects must need for scoping, public consultation, appraisal, every step of EIA. So no need of screen, that must we go for EIA. If we need to screen, only the category B projects, whether it will come under B1 or it will come under the B2. Means whether we will escape the EIA process or we will have to conduct this EIA process. So then scoping, next step is your scoping in EIA. So in scoping, the process by which this EAC means Export Appraisal Committee or SEAC means State Level Export Appraisal Committee determine comprehensive term of reference, that is exceptions in construction, township and housing where term of reference is not required. Means because that urban development, housing and construction clearance will get, government will directly get this thing done because these things are directly for settlement of the people of that locales. For that reason, that is the exception, that will not need any term of reference to submit above, before this EAC or SCAC for environmental clearance. Then public consultation, this is very important step. Another step or third stage, that is the process by which the concerns of locally affected persons are ascertained. Means the views or the consult or consent of the local people will taken by virtue of some seminar or election or written, or you can say by the local leaders, by a meeting of local leaders in ward member level, or you will go for any complaint for declaration by newspapers or local newspapers for this public consultation. I think who will read the newspapers daily, you will find by Odisha State Pollution Control Board, many public consultation projects are called for any complaint or any clearance or any problem of that local people. Have you ever seen this? Anyone? No one. Akanksha, Um, have you ever seen anything for public consultation, for public clearance or public hearing? There is a notification and there is a explanation of a so project. recent, I have read an article about public consultants. That was a plea actually. Supreme Court has judged. I don't remember exactly. It's on Odisha or Public consultation means this is a process within EIA, environmental impact assessment, to get environmental clearance by a project or industry or any activity. Okay, so in that process, the detail of the project will be notified by your nodal agency. The local nodal agency is your State Pollution Control Board, by newspapers. Means there is a time is given there, just like the ମାନଙ୍କର ବେଦାନ୍ତର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କନସଲଟେସନ ହବ କି ସିଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଉଣ୍ଟେନ ବା ହିଲ ଏରିଆରେ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ବା ବକ୍ସାଇଟ ବାଲା ମାଇନିଂ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଠି ପବ୍ଲିକ କନସଲଟେସନ ପାଇଁ କି ନୋଟିଫିକେସନ ଛାଡିବ, ଲୋକାଲ ପେପରରେ ବି ଛାଡିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେବେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ମିଟିଂ କି ସେମିନାର କି କନଫରେନ୍ସ କି ଯାହାବି, ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ତ ସେଠି ତୁମେ ଯିବ ସେ କନଫରେନ୍ସ କି ସେମିନାର ରେ বা ମିଟିଂ ରେ କଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି ଦେବେ ବା ରିଟିନ ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ବି ସବମିଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯଦି ସେଟେଲେବଲ, ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କହିବ ଠିକ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ କରିବି, ତ ମତେ ଏବେ କନସେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ
ମୁଁ କରିବି ସେଠି ମାନେ ମାଇନିଂ କରିବି ବୋଲି। So that is सर सेमती तो ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସାମରେ ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ରାଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେମ୍ କାରଣରୁ ପବ୍ଲିକ ଯୋଉ ମିଳିନି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ତତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ବକ୍ସାଇଟ ମାଇନିଂ, ବକ୍ସାଇଟ ଓର ମାଇନିଂ ଏ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଣ କୋଉ ଏରିଆ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଠି ଆମର ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ପୋସ୍କୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପୋସ୍କୋର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଇ ପୋସ୍କୋ, ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡିଶାର। ସେଇଟା ବି ପବ୍ଲିକ କନସଲଟେସନ ଯୋଗୁ ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଲାନି, ତେଣୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ତାକୁ ମିଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ହଁ ପବ୍ଲିକ Yes, sir. କନସଲଟେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଷ୍ଟେଜ, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ନହେଲେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପ୍ରେଜାଲ। ଆପ୍ରେଜାଲ ମାନେ what do you mean by appraisal? ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଇଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବାଲକୋର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ହଁ ସେଇଆ ତ କହୁଛି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କହିଲିନି କି ପବ୍ଲିକ କନସଲଟେସନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହିଁ ଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ ତାକୁ ସରି ତାକୁ ସେଣ୍ଟର ଟେକ୍ ଓଭର କଲା, ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆପ୍ରେଜାଲ କମିଟି ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କଲା ପୋଲାବରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପୋଲାବରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯୋଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ନବୀନା ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଡଗୋଳ ହଉନଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ଜାଣିନ ତମେ? ଡ୍ୟାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ୟେସ୍ ସାର୍ ଜାଣିଛି। ହଁ ତ ସେଇଟା ସେଣ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ସଲ୍ଭ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ତ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କଲା, ସରି ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କଲା। ସୋ ତାର ସେଇଟା ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆପ୍ରେଜାଲ କମିଟି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରେଇଲା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାର ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶା ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ସେଟା ହଉ ବୋଲି, କାହିଁକିନା କେତେଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଡ୍ରାଉନିଂ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ ସେଇଟା ନଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ସେଇ ରିଭରରେ ଲାଭଟା ଆମେ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ବାଲା ଉଠେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆମର ଟିକେ ସେଇଟା ମାନେ କଙ୍କଡା ନୀତି ଅଛି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? କଣ ବୁଝଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ କୌଣସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କନଫର୍ମ ଜାଣିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହାର୍ନେସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭର ସାଇଡଟା ରହିବ ଓଡିଶାକୁ, ମାନେ ଓଡିଶାର ଅଧା ଏରିଆ ତା ଦେହରେ ବୁଡିକି ରହିବ। ତ ଓଡିଶା ବାଲା ନିଜେ କରିଦେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ, ମାନେ ଯଦି ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ କରୁଛି ସିଏ ଡ୍ୟାମ, ତାହେଲେ ତମେ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ ଏରିଆରେ ଅଛ, ଓଡିଶା ଅଛି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ, ତାହେଲେ ଓଡିଶା ଆଗ ଡ୍ୟାମ କରିଦବା କଥା କି ନାହିଁ? ଇଏ ତ ସେ କାମ କଲେନି, ସିଏ କଲା ବୋଲି ଡ୍ୟାମ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କାହିଁକିନା ବିରୋଧ କରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜିଲେ, ସେ ବାଟ ହେଲା ଯେ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, କେବଳ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ତା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଗଲା। ଓକେ, then appraisal. What do you mean by appraisal? Anyone have any knowledge about appraisal? What do we mean by this appraisal? This is a detailed scrutiny by an expert appraisal committee or state level expert appraisal committee for grant of environmental clearance with recommendation to regulator leading to grant or rejection. Leading to grant or rejection. মানে appraisal মানে বুঝি পারছো? Appraise କରିବା ବା appraisal ମାନେ କଣ? appraisal committee ଗୋଟେ ଥାଏ, appraisal ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୋନ୍ ସାଂକ୍ସନ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ appraisal committee ଥାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ବି। appraisal ମାନେ ତମେ ଫାଇନାଲାଇଜ କରିବ, ତମେ ଅଥରାଇଜ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଯିଏ କି ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦିସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି বা ଗୋଟେ ଅଥରାଇଜଡ ପର୍ସନାଲ ଅର କମିଟି ଅର ଗ୍ରୁପ ଯିଏ କି ଫାଇନାଲ କରିବ ଯେ ତାକୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଦିଆଯାଉ। So that is called appraisal. Next term ଆସିଲା ତୁମର
टर्म ऑफ रेफरेंस ताले हमर कोन स्टेजेस रहिला EIA रे स्टेज कोन रहिला चारटा स्टेज रहिला गोटे स्क्रीनिंग देन स्कोपिंग देन पब्लिक कंसल्टेशन देन अप्रेजल तापर आसिला टर्म ऑफ रेफरेंस कोन टर्म ऑफ रेफरेंस सबमिट करिया को पड़े दिस टर्म ऑफ रेफरेंस इज a statement of need for and objective of the proposal. Why we'll go for this proposal, why we need this proposal or this project, and what are the main objective of this project. That is called your term of reference. Then term of reference also include the project background and description, the study area, and the impact zone. Or the impact zone means the study area will be the environmental impact zone. The environment will be affected by the study area and surrounding this area. Let's say गोटे mining हबो कि गोटे industry हबो से industry रो जदि गोटे center रे जदि गोटे industry रहिला तार चारिपटे आउरी 2 किलोमीटर रु 5 किलोमीटर एरिया रे भी pollution हबो बा problem हबो तो सेटा गोटे impact zone हला environmental impact zone ताल से total area रो हमकु दरकार कोन से टोटल एरिया को हमें ताको कोन करिया ना ईयर मार्क करिया एटा होची स्टडी एरिया फॉर टर्म ऑफ रेफरेंस प्रिपरेशन बा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रिपरेशन तले we need a clearance for the central area but we need to assess the area beyond that area because the area that will affect up to what extent by environmental pollution. Okay, let's say one industry will set the industry will in 5 hectare or 6 hectare. The industry will release the pollutants and that may disperse to the nearby 1 kilometer or 2 kilometer again. That means any settlement or any village or any type of settlement means urbanites or anything, they will be affected if there is a forest area or wildlife conservation area or whatever. The life or the human being or the social life will be hampered because of this pollution of that industry. So we should have a impact zone for study of this environmental impact assessment to get the environmental clearance. Then term of reference also include the applicable policy and institutional considerations. Yes. Then EIA requirements and decision making particulars, provisions for public involvement, how the people, if some people will be replaced for any establishment of industry or any mining activity. Some villagers, let's say some tribal people will be replaced. So they need resettlement again. And if some part of the forest area or forest product or some cultivated area, let's say destroyed due to mining or any project activity, then that local people will lose their livelihood. So to get back their livelihood or to get back a shelter, the project proponent along with the government will arrange a rehabilitation and resettlement for that locales. So that is called rehabilitation. There is rules under also Rehabilitation and Resettlement Act. There is a Rehabilitation and Resettlement Act is there. So for that reason we need the public involvement. Means if there is a mining activity or if there is a industry will be established in that area, that means the land users of that area should get some job. If you'll see in the Anugul district, most of the people are in job in NTPC area or TTPS area. In Talcher Thermal or National Thermal Corporation, Thermal Energy Corporation area, that will be the employees of this NTPC and your Talcher Thermal are mostly means more than 30% are from that local people, means from Anugul district only, because the land users will get rehabilitated by this government project or this plant establishment or industrial establishment. Tejaswini? Sir. সেটা জানিছো না নাই এনটিপিসি এরিয়া কোউঠি জানিছো?
हाँ सर ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠିକା ତମ ଲୋକାଲ ଲୋକ NTPC ସେଠି କଣ ଚାକିରି ଇଏ? ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗା ତ ଯାଇଛି ମାଇନ୍ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍, so that is called rehabilitation and resettlement rule. Then this term of reference is also alternatives to the to be examined. Means if there is no direct solution, then alternatives should be there. The impact and issues to be studied, and the requirement of mitigation and monitoring, and the timeline of completion of this EIA process, and finally the means of making the changes to TOR if necessary. If some necessary modification is required, then we'll go for that modification. This is called your term of reference. Then environmental clearance. Then the project management will to submit a half yearly compliance report to regulatory authority on 1st June and 1st December of each calendar year. All compliance reports shall be public documents and shall also be displayed on website of regulator. Means regulator, who is the regulator? Actually, Minister of Environment Forest is the regulator. The regulating agency or nodal agency is the Pollution Control Board. And you can have all the compliance reports on the website of Pollution Control Board. Then prior to environmental clearance granted for a specific project may be transferred during its validity to another legal person with no objection by transferor and regulatory authority on same terms and condition under which the environmental clearance or EC was initially granted, and for the same validity period. This no objection is given by the regulatory authority, means this Pollution Control Board. Anyone is asking something? क्लास रे अछि क्लास कोटे करछु कोन हैला कोन मु करिवि hello. Okay, so now you'll have the environmental clearance and there should be no objection to give. Yes, anyone is asking something? Rajaswini, you are telling something, then Sorry, otherwise sir. you mute your. Okay. Okay, do you have any problem? Anyone have any question regarding this? I want to show you the original notification. This is a PowerPoint. Now I'm showing you the original notification or detailed notification. This is your detailed notification. Now you can find this is published in Gazette of India by extraordinary by the section 3 of subsection 2 of a Minister of Environment Forest and on 14th of September 2006. This is the office order number 1533. This is a draft notification under sub rule 3 of rule 5 of Environment Protection Rule 1986. This will come under sub rule 3 of rule 5 of the Environment Protection Rule 1986. ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା କୋ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ନା ଦି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ ବ୍ରାକେଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ରୁଲ ଅଛି ତାରି ସେଇ ରୁଲ ଅଣ୍ଡର ରେ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁଛି ଏଟା ରୁଲ नंबर 5 ଆଉ ସବ ରୁଲ नंबर 3 ରେ कोन ପାଇଁ एटा कर हैछि नोटिफिकेशन फॉर imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities or
on expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the schedule to the notification being undertaken in any part of India, unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of national environmental policy as approved by Union Cabinet in 18th May 2006. तामाने गोटे नुआ environmental policy हेतिला सेही हिसाब रे जो environmental impact assessment notification हैला सेही हिसाब रे तुमे यदि environmental clearance न करूचो ताले जे कोनोसी न्यू प्रोजेक्ट हो बा एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट रो एक्सपांशन बा मॉडर्नाइजेशन हो ताकू कौन परमिशन मिलिबो नाही बा क्लियरेंस मिलिबो नाही जदि से ईआईए प्रोसेस रे जाय नाही एवं ताकू जिबाकू बाध्य जदि से मॉडिफिकेशन करिया चाहन्छ बा नुवा प्रोजेक्ट करिबाकू चाहन्छ से गोटे लोक हेई पारे गोटे ऑर्गेनाइजेशन हेई पारे बा गोटे सेटअप हेई पारे and the procedure is specified in this notification by the central government and or the state or the union territory level. Environmental Impact Assessment Authority (SEIA) to be constituted by the central government in consultation with the state government or the union territory administration concerned under subsection 3 of section 3 of Environment Protection Act 1986 for purpose of this notification. A notification हिसाब रे नुआ जिनस तयारी कराला, that is state level or union territory level environmental impact assessment authority जाको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट दबो इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 3 of subsection 3 of this Environment Act 1986 कोथ पाइटा हला केवल एई माने EIA नोटिफिकेशन द्वारा जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस अछि ताकू सैटिस्फाई करिया पे एटा तयारी करा गला जोटा कि 2020 रो जो नुवा एनवायरमेंट पॉलिसी हेछि बा नुआ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आसुची सेतरे कोन हेछि ना एठी डिस्ट्रिक्ट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी न्यू जिंस बे इंक्लूड हेछि आ सम मॉडिफिकेशन आल्सो रूल ले हेछि सो एटी रिक्वायरमेंट प्रायर रिक्वायरमेंट पाई कोन दरकार ऑल न्यू प्रोजेक्ट एक्टिविटी समस्ते शेड्यूल टू ए जो लिस्टेड अछंती शेड्यूल ले समान समस्ते दरकार करछंती कोन ना एनवायरमेंटल क्लियरेंस दरकार से आरंभ हुआ पूर्व एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन पाई भी दरकार ये सब शेड्यूल ले दिया है शेड्यूल एथर कहलेनी शेड्यूल टा कोठी देखो एठी ता पछकु ए जो सला नोटिफिकेशन आरंभ हला शेड्यूल एटा हला शेड्यूल ला ए शेड्यूल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी रिक्वायरिंग प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस कोगुडा सब एनवायरमेंटल क्लियरेंस दरकार करंती लिखा हला जे प्रोजेक्ट एक्टिविटी सब माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस समस्त क्लियरेंस दरकार पुन ता भीतर से कहू जे माइनिंग ऑफ मिनरल्स हेले जदी 50 हेक्टर बड़ होला से कैटेगरी ए रे आइला 50 हेक्टर छोट 5 हेक्टर बड़ होला तो कैटेगरी बी रे आइला आ कैटेगरी B2 हेला बेलकु सेटो आउरी छोट हेले तो कैटेगरी B2 हबो B1 B2 पुन डिवाइड हेछि सब प्रकार प्रोजेक्ट रो डिस्क्रिप्शन अछि शेड्यूल ले जो गुडा नाही पछर अमेंडमेंट हे कि जोडा हेछि आगो सब गोटे अमेंडमेंट हेछि एटाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट टाउनशिप प्रोजेक्ट ओके तापरे हमें फास्ट कोन देखथिले एठी ना रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस तापर देखले स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी कोन सेटा हमें कहिचे जे सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा एटा 1986 द्वारा एटा तयारी करा है तो जहार कोन ना अपॉइंटमेंट किए दबो ना सेंट्रल गवर्नमेंट दबो तादरे मेंबर को माने रहिबे ना गोटे चेयरमैन रहिबो आ गोटे मेंबर सेक्रेटरी रहिबो याको किए नोमिनेट करिवे ना स्टेट गवर्नमेंट नोमिनेट करियो बा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन नोमिनेट करियो मेंबर सेक्रेटरी रो टेन्योर केमितिया फंक्शन केमितिया एसीआईए रो फंक्शन केमितिया डिटेल्स ता देला जे द मेंबर सेक्रेटरी शैल बी सर्विंग ऑफिसर ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन फैमिलियर विथ एनवायरमेंटल लॉज बुझी पालो मेंबर सेक्रेटरी ता कोन होबा दरकार
ना गोटे गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हवा दरकार सर्विंग अफसर माने गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हेतिया दरकार से स्टेट लेवल बा यूनियन टेरिटोरी लेवल से एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर टा फॉरेस्ट सर्विसेज वाला हेले चलिबो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाला हेले चलिबो ओडिसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रो क्लास 1 हेले भी चलिबो किंतु जेतेबेले भी दिया जाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया जाए काना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एटा तो मेंबर सेक्रेटरी आकांक्षा Yes, you sir. have discussed we have discussed about something Supreme Court have some plea or some request to the union government this year for setting a Indian environmental services. Yes, sir. We have Yes, discussed this yes, earlier. this comes here. You can see here the member secretary shall be a serving officer of the concerned state government or union territory administration, familiar to environmental laws and actually familiar to environmental laws and environmental science and engineering. जार के 15 वर्षर एक्सपीरियंस थाए यार पछपटे एई नोटिफिकेशन तळे पुन देछि जे किए हेई पारिबो से एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी बा स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी रो मेंबर को माने सो मेंबर हेई पारे ता क्वालिफिकेशन कोन मु देखेबी ता क्वालिफिकेशन कोन 15 वर्षर एक्सपीरियंस दरकार एनवायरमेंट रिलेटेड ता माने को आईएएस आ आईएफएस अफसर अछि जार 15 वर्षर थिबो न थाए किंतु आमे जबरदस्ती ताको से पोस्ट रे बसो तो सेतपा इट्स बेटर कि सेमितिया गोटे सर्विसेस इंक्लूड हो Yes, sir. सेटा ठीक कथा माने 15 year experience नथियो रखि दबा କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ माने माने आश्चर्यजनक कथा सब अछि माने सेति कि तो सुप्रीम कोर्ट कोन पागला हेछि दे देला डिसीजन सर 2014 रो सर एटा अछि मोर अमेंडेड टा मोर किंतु ना 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 मोर कहया कथा जे से एबे जो यूनियन गवर्नमेंट को कहिला मान डिसीजन ने आज ए आंसर ऑफ ए रिट पिटिशन गोटे रिट पिटिशन आंसर हिसाब जे एटा करा जाऊ बोली सेंतिया सजेशंस आगुरु केबे सुप्रीम कोर्ट तरफ आसीनी this is a suggestion to the union government एला पब्लिक कंसल्टेशन केमिति होबो तारो रूल अप्रेजल रो रूल कोडा लिखा है the composition of the sector or project specific as expert appraisal committee for category A project and the state level or union territory level expert appraisal committee for category B project to be constituted by the central government. The expert appraisal committee and the union territory or state level expert appraisal committee shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria. Hello? Eligibility criteria कौन लिखा है? The person should have at least 5 years of formal university training in the concerned discipline leading to MA or MSc degree, or in case of engineering, technology, architecture discipline, 4 years of formal training in the professional training course together with described practically training in the field leading to BTech, B Arc degree, or other professional degree like law involving a total 5 years of formal university training and prescribed practical training, or prescribed apprenticeship or articleship or pass examination conducted by the concerned professional association like chartered accountancy, or in a university degree followed by 2 years of formal training in a university service academy like MBA, IAS, IFS. In selecting the individual personal's experience gained by them in their respective fields with taken note of. And the expert कौन थिबे ना a professional fulfilling the above eligibility criteria ये सब professional eligibility थिबो with at least 15 years of relevant experience in the field or with an advanced degree or PhD degree in the concerned field at least 10 years of experience जार PhD थिबो ता 10 years जार PhD न थिबो 15 वर्ष एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड रे थिबो
आउ ताको एज 70 रु बिलो हेतिबो आउ अप टू 75 जगह अलाउ करी हबो हैला But sir, why it's MBA written here? I mean, what's the role of MBA graduate's role? I mean, what is role over here? Actually, I don't understand. there are important role of MBA is there. I mean, what kind of roles? That is the management system which we are discussing now. Actually, we are now discussing about environmental impact assessment, which is a But it part of, can be listen, implemented. Okay. okay, got a minute for pachari. Mhm. That this environmental impact assessment is a part of environmental management system. Is a part of environmental management system. The environmental management system means you need a environment friendly environment or a system which will control the environmental factor of any industries which have some products or any activity which have some services. जहाँ जेकोसी प्रोडक्ट और सर्विस दौथुवा एक्टिविटी बा इंडस्ट्री बा जहाँ भी अच्छी तार गोटे सिस्टम होबा कथा जे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करिवो बा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करिवो तो सेई जिंसटा करे किए ना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम दैट मैनेजमेंट सिस्टम रो जो रूल अच्छी ता भितरे इंपैक्ट असेसमेंट गोटे टूल से मैनेजमेंट सिस्टम रो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी ताको कहउछ हम आईएसओ 14000 सीरीज सो आईएसओ 14000 सीरीज हाँ हिसाब रे हां हाँ सर एडम शुणिची शुणिचे नु आमे वर्तमान जो पेपर पढुचे मु वर्तमान जोटा यूनिट 2 एने आरंभ करछि से यूनिट 2 थारु 5 पर्यंत आईएसओ 14000 सीरीज चलीछि तो स्टोरीटा पूरा जानि पारिबु जेतले आमे ईएमएस भितर पसिबा से पाठटा होचे एक्चुअली कोन एनवायरमेंटल साइंस विथ एमबीए रो सेटा एक्चुअली एमबीए पाठ कान आमे गोटे मैनेजमेंट रिलेटेड माने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कहउचे माने निश्चित एमबीए रो एमबीए वालांकर जेमिति फाइनेंस अछि गोटे स्पेशलाइजेशन एचआर अछि गोटे स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गोटे सेमिति स्पेशलाइजेशन भी अछि आ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी गोटे स्पेशलाइजेशन अछि ए स्पेशलाइजेशन एग्जैक्टली शार्प स्पेशलाइजेशन तुमे पाइबो को वाला एमबीए रे ना जावियर वाला एमबीए रे आईआईएम रे जो एमबीए कोर्स अछि से माने पाखरे ए सब स्पेशलाइजेशन अछि बुझि पाइ तमे जे कोनोसे मैनेजमेंट सिस्टम कहउछ माने तो निश्चित भाबरे कोन अछि सेठी मैनेजमेंट सिस्टम माने एमबीए पर्सनल रोल ही अछि कारण ताकू जणा अछि कि केमिति एडमिनिस्ट्रेशन आ केमिति मैनेजमेंट करा जाय पाठ से माने पढिचनि मैनेजमेंट आ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी सेही पाठ तमे गोटे कथा चिंता करो जे तमे गोटे प्रोडक्ट मार्केट रे बिकिया को चाहछो गोटे प्रोडक्ट आकांक्षा हियर लिसन गोटे Yes, sir. प्रोडक्ट हम जेतबेले मार्केट रे बिकिया को चाहछे एवं सेटा गोटे एनवायरमेंट फ्रेंडली बा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ताहले गोटे एमबीए वाला रो कोन इंपोर्टेंट रोल थिबो सेटा तो एमबीए वाला ही कंपनी चलौथिबो ना तो तार इंपोर्टेंट रोल कोन थिबो जे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पई से हेल्प करियो तमटे मन पकाओ आमे गोटे पाठ पढिले दैट इज आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं तार बिजनेस हाँ हाँ बिजनेस चार्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ता माने सेठी बड़ बड़ कंपनी मानकर सेटा यूनियन से खाली ट्रेडिंग विषय बुझे किंतु सीए भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऊपर एक्शन ने काकना जदी बड़ बड़ कंपनी माने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विषय भाबिबेनी ताले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केबे ही परिबो ना तांकर काम होला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करबा आ अल्टरनेटिव मेथड्स केमिते कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस होबो तांको प्रोडक्ट मार्केट रे बिक्री हला बेले बा यूज हला बेलको बा तार रिसाइक्लिंग करिया को मोबाइल फोन रो रिसाइक्लिंग सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल रो रिसाइक्लिंग पई देखिबो एबे रेलवे स्टेशन ने मशीन लागिछि मोबाइल रो भी माने रिसाइक्लिंग पई मशीन लागिलानी तो एमतिया काहे करछन ए सबु हेला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज बा कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज पार्ट
जोटा कि ए सब डिसीजन नौथुओ कि सेठिकार गोटे एमबीए लोक कारण ता मैनेजर ही नौथुओ ना। आ गोटे कथा जानिछ कि नहीं सब इंडस्ट्री रे जो पोस्ट अछि कौन कहला मन करा जाओ मु कहली कि वेदांत एल्युमिनियम हैला कि तमरो टाटा स्टील हैला हिंडाल्को स्टील हैला ये सब रे जो बड़ बड़ कंपनी अछि से कंपनी मानकर जो माने एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट अछि से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट गोटे होची एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम तार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी रुहंती तम एनवायरनमेंटल साइंस बा बीटेक एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग बा सिविल इंजीनियरिंग पिला बा केमिस्ट्री पीजी पिला बा केमिस्ट्री ऑनर्स पिला आउ ता धेरे भी ता ऊपर पोजीशन ना हला कोन ना असिस्टेंट जनरल मैनेजर एनवायरनमेंट जनरल मैनेजर एनवायरनमेंट बुझ परछ नाही मैनेजर एनवायरनमेंट ताकर पोजीशन उडाकर ना सब मैनेजर लागि थाए एवं से पोजीशन पई तुम भलिया एनवायरनमेंटल साइंस पढ़ी पीजी करी बा पीएचडी करी एक्सपीरियंस नै करी भी से लोक भी से जगह को जाई परिबो गोटी एमबीए पिला से एमबीए करि सार कि एनवायरनमेंट स्पेशलाइजेशन जदी करथिबो एमबीए ताहले सी भी जाई से जगह रे जॉब करि परिबो। अच्छा माने स्पेशलाइजेशन टा से एमबीए रे एनवायरनमेंट रे करिवे। हां हां अच्छा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऊपर करिवो ता स्पेशलाइजेशन सेटा थिवो से मन कर एमबीए टा 2 वर्ष र कला ताले 6 मंथ रो स्पेशलाइजेशन करथिवो एनवायरनमेंट ऊपर न लाबनी तापर से कोर्स भी दरकार पड़ले से करथिवो माने एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट ऊपर से कोर्स करथिवो इंटर्नशिप करथिवो एक्सपीरियंस करथिवो चाकरी करिगिरी 10 वर्ष रो 15 वर्ष रो एक्सपीरियंस दरकार पर हम कहली ताहले से एमबीए पिला एलिजिबल होबो सेठी जो मु एलिजिबिलिटी देखेली सेटा हला कोन ना सेटा होची तुमरो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माने बेस एलिजिबिलिटी प्रोफेशनल कोन तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोन होबा दरकार सेटा लिखा आइछि ता परे लिखा आइछि पूरा पुनी एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट लाइन 10 वर्ष होबा दरकार पीएचडी थिले 10 वर्ष पीएचडी नथिले 15 वर्ष होबा दरकार बुझिला तो। यस सर। नेक्स्ट हैला द अदर टू मेंबर्स गोटे हैला मेंबर सेक्रेटरी 3 जणिया मेंबर मिनिमम हुए स्टेट लेवल एनवायरनमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी रो the other two members shall be either a professional or a expert fulfilling the eligibility criteria given at appendix 6 to this notification आउ मैं आमे पढ़ी देले से जो कोन ताकर एक्सपर्ट रो हबा दकर एलिजिबिलिटी one of the specified members in this sub paragraph 3 means एटा ए दीटा मेंबर जणे मेंबर above who is an expert in the environmental impact assessment process shall be the chairman of EIA ये दी जण जणे चेयरमैन हबो केन काहे कि ना मेंबर सेक्रेटरी गोटे अफसर माने ऑफिसर माने बुझी परछ त हमर जेमति कि माने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी जे सेही आ कोन सेमति एसीआईए रो गोटे मेंबर सेक्रेटरी हेतिबो सेही सेम पर्सन हेई परिबो नले जणे बाहर जणे ऑफिसर भी हेई परिबो से आ गोटे एसीआईए फ्रेम करियो ए जिंस बुझी होची ना नाही जदि का कुछ कंफ्यूजन होची पचार काना आगु को बहुत कंफ्यूजन हे जिवो आ मन रखता आर जो ईच लाइन नहीं ईच लाइन इंपोर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो फॉर नेट ईच लाइन ईच वर्ड काहे कि ना सीधा एमिति क्वेश्चन पचारिबो से क्लॉज नंबर सब क्लॉज नंबर रो क्वेश्चन पचारिबो ए हिसाब रे कोन दिया आइछि पचारिबो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन एसीआईए रो पचारिबो नुवा कोन होउची अमेंडमेंट है कि काहे कि एटा चेंज हेछि एग्जैक्टली केते दिन पर टर्म ऑफ रेफरेंस न देले ऑटोमेटिकली सेटा एनवायरमेंटल क्लियरेंस सही जाय एग्जैक्टली एई सब जिंस ही क्वेश्चन पचारियो तो तुमे एटा जानिबा दरकार एटा बहुत ही इंपोर्टेंट one of the specified member have a chairman then the state government or union territory government shall forward the name of the members of the chairman referred in sub paragraph 3 to 4 above to the central government and the central government shall continue the SCIA as an authority for the purpose of notification within 30 days of date of receipt of the names state government जेतबेले दबो ना गुडा प्रपोज करियो एसीआईए पई सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिन भीतर तादिरो सिलेक्ट करके फाइनल कमिटी मेंबर्स लिस्ट देई दबो जदि न दबो 30 दिन भीतर ताल सेटा अप्रूव्ड बेले जणा पड़ जो आउ जते नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द चेयरमैन नॉन ऑफिशियल मेंबर आउ चेयरमैन एमान कर ओटा फिक्स टेन्योर थाए 3 वर्ष 3 इयर्स गोटे मेंबर सेक्रेटरी जे सी होउची ऑफिस माने गोटा ऑफिसर टा आईएस के आईएफएस ऑफिसर टा तो तार तो टेन्योर किछ नहीं
केवल ए नॉन ऑफिशियल मेंबर से माने बाहर लोग all decisions of this EIA are unanimous and taken in a meeting जदि unanimous न जणे जदि राजी होनी ताले सेठी environmental clearance आउ देई हबो नाही तापर एला कैटेगरी प्रोजेक्ट्स कैटेगरी प्रथम हला बी प्रोजेक्ट्स कैटेगरी बी प्रोजेक्ट they asila kono na all the project activities including category B in the schedule including expansion modernization of existing projects or activities of the specified in sub paragraph 2 of paragraph 2 or changes in the product mix as specified in the sub paragraph 3 of paragraph 2 but excluding those which fulfilling the general conditions stipulated in the schedule will require prior environmental clearance from the state or union territory level environmental impact assessment authority. In absence of duly constituted ACIA or SCSC, the category B project may be treated as category A project. So different steps of environmental impact assessment by environmental clearance process, like screening, scoping, public consultation and appraisal. Okay. So screening रे देखिले आमे कोन करिवा ना आगो स्क्रीन करे इंपोर्टेंट कथा कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को स्क्रीन करे अछि के B1 ने आउछि के B2 रे आउछि काना कहा को आमे स्कोपिंग स्टेज को आगो को नबा कहा को नबानी ए आर डिसीजन का नबार अछि ओके देखो ये जो चारटा स्टेजेस ऑफ प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस न्यू प्रोजेक्ट जो चारटा स्टेज था हम सेठी भी पढिले स्क्रीनिंग स्कोपिंग पब्लिक कंसल्टेशन अप्रेजल एडी भी सिया देखछे स्क्रीनिंग करियर जो स्क्रीनिंग रे कोन हबो ना देखो जे कैटेगरी बी टा पुन डिवाइड हेछि B1 and B2 रे the projects requiring an environmental impact assessment report shall be termed as category B1 and remaining projects shall be termed as category B2 and they will not require any environmental impact assessment report. B2 category जो वन छोटो projects रहिले से मानको environmental impact assessment report दरकार नहीं. For categorization of B1 and B2 except item number 8B the Minister of Environment and Forest shall issue a appropriate guideline for time to time. किए B1 आछो कि B2 रे आसीबो सब बेले MOE वेबसाइट रे नुआ नुआ इंडस्ट्री इनपुट हबो को साइज बा को एरिया एक्सटेंट रे बा को इंटेंसिटी रो प्रोडक्ट जनरेशन को नै करी आमे कैटेगरी B1 ने का को रखिया B2 रे का को रखिया सेटा डिफाइन करा हेछि किछटा आउ जेते बेले नुआ नुआ प्रोजेक्ट आछो त कोन डिफाइन हे के अपडेट करा होछि हम पढ़िले स्कोपिंग पब्लिक कंसल्टेशन भी पढ़ले पब्लिक कंसल्टेशन केमिति हुए एग्जैक्टली इट एक्सप्लेन हेछि अप्रेजल भी पढ़ले आ गोटे अछि जे केते टाइम पाई के एनवायरमेंटल क्लियरेंस वैलिडिटी थाए वैलिडिटी ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस grant or rejection of environmental clearance okay validity of environmental clearance जदि once गोटे प्रोजेक्ट को माइनिंग प्रोजेक्ट को दिया हे गला कोन ना गोटे एक्टिविटी को दिया गला कि तुम एनवायरमेंटल क्लियरेंस ताल केते दिन जाके वैलिड करियो गोटे वर्ष जाके वैलिड करे जोथरे कि ट्राई मंथली एबे कोन होची ना चेक करा होची क्रॉस चेकिंग सो 3 मास थरे क्रॉस चेकिंग हबो गोटे वर्ष जाके वैलिड करची गोटे एनवायरमेंटल क्लियरेंस so गोटे इंडस्ट्री पाई बा छोटो प्रोजेक्ट्स पाई अदर प्रोजेक्ट्स पाई एक्सेप्ट कहा पाई ना environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for 10 years कहा पाई ना river valley project 10 years for river valley projects then 5 years sorry कोटा गला river valley project हला तापरे for mining project it is 30 years 10 years for river valley projects for mining project it is 30 years then 5 years in all other cases of the projects and activities and 1 year for small projects and actually this period of validity may be extended by the regulatory authority
considered by maximum period of 5 years जोटा 1 year अछि ताकू भी extend करि परिबे 5 years provided an application is made to regulatory authority by the applicant within the validity period सब वर्ष तुमर validity period पूर्वरु तुम application लिखिबो एवं गोटे सर्वे रिपोर्ट दबो से हिसाब तुम एनवायरमेंटल क्लियरेंस ता अपडेट हो आजिकल 3 मास को थरे सेटा अपडेट होबा को बाध्य हो जाईछि आ बोध हुए 2020 लागू हेले प्रत्येक मास रे अपडेट होबा को पड़ियो माने तमरो पोल्यूशन नॉर्म्स तमे स्टैंडर्ड रे अच्छो कि नाही जो इंडस्ट्री हेता कि जो एक्टिविटी हेता एनवायरमेंटल क्लियरेंस ता को सब बेल पई रखिया पई हेले माने अपडेट माने क्लियरेंस सर्टिफिकेशन ता सब बेले रहया को हेले ताले तुमको प्राय प्रति मास रे दवा पड़ो रिपोर्ट जोटा कि प्रथम 2006 रे लिखा हेतिबा रूल ले लिखा हेछि जे 5 वर्ष पई भी सेटा एक्सटेंड हे परियो खाली तमरो वैलिडिटी पीरियड सरिया पूर्व तुम थरे लिखि कि दबार अछि so that's all you can follow this document ए पीडीएफ टा ही फॉलो करिवो एते डिटेल्स अछि बुझिला आ से स्लाइड रे हम जस्ट एक्सप्लेन करछु some important flow chart also there in another slide actually okay anyone have any question till now whatever we have discussed you can see here is it visible Yes, sir. yes here the timeline is given means the total EIA process the submission of application that is form 1 or whether it is required for form 1A okay the investor will submit the form 1 with preliminary report that is called your term of reference then at stage 1 in screening process it will decided that this project will come under category A or B if it is A central government or export appraisal committee will deal with this जदि एटा ए नुह ताल बी ताल स्टेट गवर्नमेंट को आसिला स्टेट लेवल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ताको डील करियो सो ए जो स्टेज 1 है एटा बी की बी रे पुनी B1 की B2 आसिला ए डिसीजन नै कि नेक्स्ट स्टेप को ये जीवो ना जीवनी नेक्स्ट स्टेप को जीवो कि जीवनी ए सब डिसीजन ता तुमको निया हबो 60 दिन भीतर जो नेक्स्ट स्टेप रे अछि स्कोपिंग रे कोन हबो ना टर्म ऑफ रेफरेंस सबमिट करिवो सेही के ना इन्वेस्टर जो टर्म ऑफ रेफरेंस सबमिट करछि ता ऊपर एक्सपर्ट कमिटी कोन करिवे ना तुमको रिप्लाई करिवे दैट रिप्लाई विल बी इज डन ओनली इन 60 days preliminary prepare a preliminary EIA report investor gote preliminary EIA report tiyari karibo on the base of this term of reference then within the 45 days state pollution control board public consultation पाई कि कोन करिवो टाइम दबो डेट दबो एडवर्टाइजमेंट दबो जणेइबो जे आमे पब्लिक कंसल्टेशन करिवु एई डेट रे एई कंपनी रो एई जिंस पाई बा एई प्रोजेक्ट पाई करा हबो जदि 45 डेज भीतर न करला ताहले से पुनी अनदर 45 डेज थर्ड पार्टी की नै कि करि परिवो के ना इन्वेस्टर तापर कोन ना EIA रिपोर्ट कोन अपडेट करा हबो काई EIA रिपोर्ट अपडेट करा हबो कारण पब्लिक मान लोक मानकर पुन गोटे कंसेंट रे किछि कंडीशंस देथिबे लोक माने आम पई एटा करा जाऊ सेटा करा जाऊ तापर आम जगह आमे दबु तो व्हाटएवर से कंडीशंस ताको सैटिस्फाई करिकि पुन गोटे अपडेटेड EIA रिपोर्ट तयारी हबो सेटा
अप्रेजल हवा को जीवो सेटा भी 60 दिन भितर तुमको अप्रेज करके एक्सपर्ट कमिटी सबमिट करिया को पड़िबो जदि सेटा अप्रेज 60 दिन भितर करला ताहले 15 दिन भितर तमे फाइनल डिसीजन सुनेइबो बाय द रेगुलेटिंग अथॉरिटी मींस EIA और सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी बुझिला जदि तुमे ए जे कोन से टाइमलाइन एट दिया है ए टाइम गैप भितर ए शेड्यूल भितर तुमे जदि न करूछ ताहले सेटा सपोर्ट रे पळे जीवो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट बा इन्वेस्टर So, main important loopholes and deficiency in this process is stage one screening based on the information supplied by the investor. Actually, screening time में करछे कहा basis रे ना investor जहाँ भी supply करछे तुमको information or pre-feasibility report of conceptual plan, no guideline for requirements or thereby no need to address environmental issues. So in scoping stage रे कोन होची ना से टर्म ऑफ रेफरेंस को देखि कि तमे स्कोपिंग करछो नो पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द स्कोपिंग प्रोसेस रे भी किछि पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी ए सबु एनवायरमेंटल कंसर्न गुडा को टर्म ऑफ रेफरेंस रे जहा भरी करी प्री EIA रिपोर्ट रे देला प्रोपोनेंट बा इन्वेस्टर से हिसाब रे तार स्कोपिंग करा होची पब्लिक कंसल्टेशन ने कोन भी होची ना अनक्लियर वर्डिंग एंड डेफिनेशंस माने एक्चुअली सेठी एक्जाक्टली पब्लिक रिटन ने किछि दिएनी कंसेंट गोटे सेमिनार भले हबो बा वर्बल वोटिंग हबो सेइतरे जहा तुमको मिलला रिजल्ट आ रिटन सिग्नेचर करथियो खाली लीडर जे वार्ड मेंबर हैला सरपंच हैला एई माने ही साइन करिवे किंतु लोक मानको संगे माने गोटे जगह रे गोटे सेमिनार भले हबो से मीटिंग रे भाषण दिया हबो सेइतरे हां नाही खाली पार्टी रे जा सुनिवे एई भले सिस्टम रे पब्लिक कंसल्टेशन चाले आ बेले बेले तार एगेंस्ट रे लेखिया पई लोक माने पब्लिक माने पूरा दियंती लेखिकी दियंती साइन करिकी सेत पई के सेटा प्रॉब्लम सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होय छै टाइम किंतु एक्चुअली कंसेंट साइन करंती जे जो माने होचंती लोकल लीडर्स आ आ पई के टाइमलाइन भी बहुत टाइट हे जेबो 45 डेज सब बेले माने टाइमलाइन ता 45 डेज रे से जिंसटा हेई पारिबो न हेई पारिबो दैट फिजिबिलिटी विल डिपेंड ऑन द लोकलेस एंड लोकल पीपल एंड देयर एजुकेशन लेवल माने ट्राइबल पीपल को नहीं कि हम 45 डेज रे डिसीजन नवा सिटी माइनिंग होबो कि न होबो ताकू तो लागि जो 2 मास से बुझिया पई जे कोन होबो so that is some deficiency so limiting access to the information only the summary of EIA report made available and not the full detailed EIA with all term of reference from the scoping process confidential information are not disclosed in the summary of EIA publicity use of internet as the main means no definition on how publicity should be carried out yes publicity केमिति करिवो सेटा केबे डेफिनेशन लिखा इन लॉ रे तो सेति पई कि आमे खाली इंटरनेट रे पठै दोचु डॉक्यूमेंट आउ कोन ना नहले न्यूज़ पेपर रे पठौछु जेते बेले दरकार पडुची तो दैट इज द डिसीजन ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जा डिसाइड करिवो से आइ हबो जोटा सेंसिटिव थिवो से पठैबोनी जोटा सेंसिटिव नथिवो देइ दबो समरी ऑफ EIA करि पठै दबो शॉर्टकट करिकि आ जोठी नाही कि तो डिटेल EIA दबो कुछ सेटा ता इच्छा काकि सेठी डिफाइन है so these are some deficiency or loopholes in this process also appraisal we no public participation in appraisal or argument between the regulatory authority or expert committee made only to the investor or not to the public and the deemed clearance in case of decision is not given within the prescribed timeline applicant may proceed as through clearance has been granted or denied माने बुझी परछ कि नै जदी ठीक टाइम रे गवर्नमेंट देलानी डिसीजन ताले सेटा धरा जीवो बाय माने ये बाय डिफॉल्ट कि सेटा अप्रूव हे गेला बेली तो सेटा भी गोटे प्रॉब्लमेटिक रूल से रूलटा भी चेंज होवा दरकार तो दैट्स ऑल ए दी तीनटा पॉइंट थिला जोटा कि तुम देखिया चाहतली एनी क्वेश्चन Any question? This is very important. तमे ये स्लाइड भी यूज करो किंतु से डॉक्यूमेंट इज इंपोर्टेंट ए स्लाइड रे गोटे सुविधा जे तमे टोटल जिंसडा बुझिबा को बड़ सुविधा हबो
ए स्लाइड टा को गोटे माने एटा हो जोटा कंसाइज हुए जे तमे गोटे विजुअलाइज करि परिबो होल EIA प्रोसेस टा कोन तापर यार तमे डिटेल डॉक्यूमेंट टा पढिबो एक्चुअली एग्जाम रे लिखिया पई डिटेल डॉक्यूमेंट ते बहुत सुविधा तमे अवश्य स्लाइड रू भी जहा लिखिबो सेटा भी किछि भूल लिखा जायनी बट बेसिक कंक्रीट होची कि तमे माने इन बिटवीन द लाइंस पढिबो से जो डॉक्यूमेंट बट बिफोर दैट तम जदि ये स्लाइड टा को देखिबो ताले तुमको बहुत जिंस अंडरस्टैंडिंग रे सुविधा हबो काना एटा गोटे समराइज हेछि से स्लाइड रे पावर पॉइंट स्लाइड रे अरे किछि किछि बुझा पड़ला ना किछि बुझा पड़ला नहीं सौरभ अरे बुझेला तो यस सर ओके विश्वजीत Yes, sir. सब एस कह के सोई पड़या पळे आठ नहीं कि सोनाली बुझेला आज का क्वेश्चन नहीं आगे सर कौन बुझेला EIA कौन हाँ सर बाकी से जो कैटेगराइजेशन टा टिके बुझी पाइलेनी सर कैटेगराइजेशन माने जो कैटेगरी ए बी बा B1 हाँ B2 माने हाँ 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 माने करो गोटा एरिया रे गोटे मोटा माइनिंग एरिया अछि कोई कोल माइनिंग हैला जदि 50 हेक्टर रु बड़ एरिया रे कोल माइनिंग होउछि ताल ताको हम कैटेगरी ए कहबा जदि 50 हेक्टर रु 5 हेक्टर भिତରେ होउछि ताल हम ताको कैटेगरी बी कहबा आ 5 माने 5 50 हेक्टर रु 5 हेक्टर भिତରେ हेले कैटेगरी B1 एक्चुअली कहबा आ ता ठर छोट हेले हम ताको कैटेगरी B2 कहबा कैटेगरी B2 माने 5 हेक्टर थारु छोट कोल माइन ताको खोलिया पई कि हमको दरकार नाही डिटेल EIA प्रोसेस फॉलो करिवा एनवायरमेंटल क्लियरेंस पई किंतु कैटेगरी B1 पई हमको एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिटेल प्रोसेस जिबा पड़िबो आउ कैटेगरी ए पई कि जिबा पड़िबो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो मान रहिले बा जो एक्टिविटी रहिला ताकू सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो एनवायरमेंटल क्लियरेंस आउ कैटेगरी बी को किए करिवो ना स्टेट गवर्नमेंट करिवो स्पेशली कैटेगरी B1 कैटेगराइजेशन साइज आउ प्रोडक्ट रा अमाउंट आकु नै के करा हैछि से कैटेगराइजेशन ता शेड्यूल रे तळे दिया हैछि कोटा को कैटेगरी रहिबो बुझेला आज्ञा सेटा पुनी अपडेट भी करा जाय कैटेगरी माने जे नुवा नुवा जदि किछि ऑर्गेनाइजेशन बा इंडस्ट्री पसिला तो ता पई गुटे कैटेगरी पुनी करा जिवो पुनी गुटे नोटिफिकेशन आसीबो सेठी गुटे अपडेट करा हबो एमति बहुत गुटे अपडेट्स भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वेबसाइट रे सब बेले तम पाइयो किंतु एटा हला बेस लॉट आ नोटिफिकेशन ता एटा पढिया दरकार एटा मन रखिया भी दरकार रश्मि रेखा have you any doubt or you have clear अच्छु तो तू अरे रश्मि से बोल नहीं हां छी हां सर जो स्क्रीनिंग टा ऑथोरिटी कहबे कि जोड़ा जो स्टेजेस टा हाँ स्क्रीनिंग रहला कोन ना स्टेज हला चारटा स्क्रीनिंग स्कोपिंग आउ पब्लिक कंसल्टेशन आउ अप्रेजल स्क्रीनिंग माने हला कोन ना तमे से कैटेगरी को कैटेगरी रे जाउची प्रोजेक्ट से स्क्रीनिंग करबा वाला काम स्क्रीनिंग प्रोसेस रा काम हला एटा कैटेगरी ए रे जाउची ना B1 रे जाउची ना B2 रे जाउची से डिसीजन नवार प्रोसेस टा को हमें स्क्रीनिंग करछ तापर स्कोपिंग आसला स्कोपिंग रे कोन हला ना एटा EIA रो प्रॉपर प्रोसीजर रे जीवो ताको हमें स्कोपिंग कहउचे माने स्कोप दउचे जे EIA प्रोसीजर भितर एटा जीवा कथा ता भितर टर्म ऑफ रेफरेंस दबार अछि गोटे प्रिलिमिनरी EIA रिपोर्ट दबार अछि प्रोपोनेंट को कोन दबार अछि दरकार पड़ले ACEA ग्रुप सेठी सर्वे करिया विजिट करिया भी जाई पारे ए सब जिंस स्कोपिंग रे अछि तापर आसला पब्लिक कंसल्टेशन पब्लिक को पचारि कि ताकर कंसेंट नबार अछि ताकर सुविधा असुविधा देखियार अछि से हिसाब रे रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट करैबार अछि से हिसाब रे तम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करि कि लोक मानकर प्रॉब्लम टा को सॉल्व करे अछि बाय सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी हला तो ए जिंसर टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेंशन करे अछि कि पब्लिक कंसल्टेशन को क्लियर करे अछि पब्लिक तुमको यस कंसेंट दवा कथा ओके गो अहेड करिया कथा तापर अप्रेजल मान तापर तुम डिसीजन नबो बाय अप्रेजल कमिटी अथॉरिटी तापर डिसीजन दबो जे हां ठीक अछि सब ताले एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाऊ
Okay, actually, this will the major part of second unit, and then some definition part is there for this environmental management system. ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବି ତାପରେ implementation of environmental management system, then steps of environmental management system ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ତାର ପୁରା କଭର କରିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ତକ ଆମେ ତାପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ କୋର୍ସଟି ସରିଯିବ ମୁଁ ଯାହା ପଢଉଛି ତାପରେ ମତେ କହିବ ଲର ସାର୍ କଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢେଇବି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପେପରରେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ 2 ତମର ୟୁନିଟ୍ 1 and 2 ପେପର 301 ରେ ଏ ଯୋଉ ଏନଭାୟରमेंटल ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ହେରିକା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଏନଭାୟରमेंटल ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ତା ତ ପଢଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରିଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଟା ପଢେଇବେ ପଲ୍ଲବୀ ମ୍ୟାଡାମ थर्ड और फोर्थ यूनिट एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और जेनोबायोटिक डिग्रेडेशन एटा शांति मैडम पढौछन्ते फिफ्थ यूनिट हैला क्लाइमेट चेंज सेटा सरोज सर पढेबे आ मु जो पेपरटा पढौछि से पेपर रे भी फिफ्थ यूनिट सरोज सर पढेबा कथा बट आई विल कंप्लीट सरोज सर पढेले पढेबे न हले भी चलिबो से पढेले पढेबे किंतु मु कंप्लीट कर देबी से जो एनवायरमेंटल ऑडिट भी ता धरे कहि देबी से टोटल प्रोसेस टा कहि देबी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ओके if you don't any doubt so go through the material गोटी गोटी करे पढ़ एवं जे डाउट हैला मत पचार सुनो जेहेतु सब जिनस रे तमे माने लॉ रिलेटेड पढुछ सबले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टा पढिले ही बेटर नॉलेज हबो आ ठीक जिनस तमे बुझिबो हैला तो सबले ट्राई करो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टा पढिया सो डेफिनेटली मु सजेस्ट करबी कि से पीडीएफ टा पढिया पई बट तुम्हें पावर पॉइंट फॉलो कले तुमको गोटे जिनसटा ओवरऑल नॉलेज टा हो तापर गोटे अंडरस्टैंडिंग हो जे आमे जो डिटेल नोटिफिकेशन पढिबा तादरे कोन लेखा अछि को स्टेप टा केमति जाउछ रोजालिना बुझिउ सब Yes, sir. ओके ठीक अछि okay that's all for today so we'll discuss in next class now I'm leaving this call